कह रहा हूँ कि यार एक बात बता, तू कैसे उम्मीद कर सकता है गरीब आदमी से कि वो अपनी दिमाग के अंदर जाके साइको एनालाइज करके अपना फिक्शन रिकग्नाइज करे? देखो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअलाइज नहीं है ये सब कुछ. इट्स ऑल्सो वेरी मच इन्वॉल्व्ड. इट्स ऑल्सो वेरी मच अ प्रॉब्लम ऑफ लाइक द नियो लिबरल structures that are in place. Damn dude, I love this leftist side of you. नहीं, like This bell hooks reading Judith Butler spitting side of you. बता. I'm very नहीं, interested. I feel like कि पहले ऐसा होता था कि क्लासिक लिबरलिज्म में देयर वाज दिस रोल होते थे लोगों के पास. मैं तुम्हारा जमींदार हूँ, तुम मेरे यहाँ पे काम करोगे, तो मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार करूंगा और तुम मेहनत करोगे. People had their roles, but now the thing is in a neoliberal society जिसके अंदर like गवर्नमेंट्स का बहुत मिनिमल रोल है. एंड अगर मिनिमल रोल वो ये भी है कि इट इज़ नॉट टू गिव सब्सिडीज टू पीपल हु नीड देम. इट्स मोर अबाउट इन्वेस्टमेंट्स टू पीपल हु कैन एक्चुअली ब्रिंग इन मोर एफर्ट्स. तो Okay. तो एक तरीके से हमारा जो पूरा का स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है, इट वांट्स अस टू बी द जमींदार एंड बी द टिलर्स ऑफ द लैंड. I didn't follow that at all. Did you follow that? कैसे समझाऊं? इट्स Example देके. एग्जाम्पल देके ना, इट्स लाइक यू बिकम द वॉचर एंड यू कैसे बताऊं मतलब. तू पुलिस और चोर दोनों है. हाँ, कि मतलब कैसे? क्योंकि मतलब आपको हमेशा बस ये बोला जाएगा कि ये आइडियल है, मेहनत करते रहो, यू विल अचीव दैट. तो इसको डिस्क्राइब करने का जो तरीका है, द वे आई थिंक ऑफ दिस इज कि भाई देख, ऐसा है, कैपिटलिज्म इज इफेक्टिवली अ रिलीजन. या द चर्च ऑफ कैपिटलिज्म इज वॉल स्ट्रीट. द pastors of capitalism are motivational men. And effectively what is being sold to you is money as god. ठीक है, तो मेहनत करते रहो, उस लूप में लगे रहो. And this is very much like the Fight Club sort of ideological paradigm कि wake up. ये तुम्हें चक्के पे चला रहे हैं, तुम चक्के पे चल रहे हो, एक मीनिंगलेस कंपटीशन को फॉलो कर रहे हो. राइट. बट हाउ डज दैट लीड टू ये तुम चोर और पुलिस दोनों हो वाला आउटकम? तुम चूतिए हो, ये मैं समझता हूं. नहीं, तुम चोर और पुलिस इसीलिए हो क्योंकि पहले ये होता था कि अगर कोई बंदा मेहनत नहीं कर रहा है, हाँ, तो उसको कोड़े पड़ते थे जमींदार के लोगों से. ठीक है. बट आज की डेट में अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ तो मैं खुद को मार रहा हूँ. आई विल बी मोर डिप्रेस्ड. पहले होता था ऑपरेशन, अब हो रहा है डिप्रेशन होता है, क्योंकि मतलब यू ब्लेम योर सेल्फ. राइट. सो ब्यूंग हुल चान करके एक बंदा है, कोरियन करके, ही टॉक्स अबाउट दिस सोसाइटी ऑफ बर्नआउट, okay, which is propagated by the structures in place. Right. इतने सारे जो लोग हैं आजकल की डेट में जो इतना ज्यादा बर्नआउट फेस कर रहे हैं, एवरीथिंग है ना, इट्स फेयरली कॉमन. पीपल थिंक इट्स वेरी मच लाइक रिलेटेड टू कि आपकी वजह से हो रहा है, यू नो, इट्स ऑल इन योर हेड. बट द थिंग इज द सोसाइटल स्ट्रक्चर्स इन प्लेस एंड द वे मनी इज नाउ बीइंग ऑपरेटेड, विच बेसिकली एक तरीके से आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हो, है ना, आप इंडिपेंडेंट हो, ज्यादा इन्फ्लुएंस है तुम्हारे पास जो तुम खुद से कर रहे हो एंड एवरीथिंग, तो तुम्हारे को ज्यादा पैसे मिलते हैं. तो एक बंदे के दिमाग में ना हमेशा एक डंडा अपने आप पे ही वो मारता रहता है. बिल्कुल. एंड आई फील लाइक दैट, कमिंग बैक टू लाइक दैट होल मैस्कुलिन स्पेस एंड एवरीथिंग, तो फिर इसमें अ पर्सन इज बाउंड टू बी मोर नार्सिसिस्टिक, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ भैंचोद मैंने मेहनत करी है, मेरे को मिला है. He is bound to be more neurotic. So what do you replace it with then? फिर कैसे जी आदमी? The only देखो इसके this is my issue with like critical theory as well. कि मतलब explain to people what critical theory is basically like in postmodernism the structures in place have been so oppressive कि उनके ऊपर एक तरीके से कभी भी किसी ने ढंग से वो नहीं किया, क्रिटिक नहीं किया. I'll explain to people. So postmodernism is a way of thinking where structures are bad and everything. हाँ, वहाँ जहाँ पे हम एक पॉइंट आता है हिस्ट्री में जहाँ मॉडर्निटी में जागते हैं और बोलते हैं वाओ ये हमारे ओवरआर्चिंग स्ट्रक्चर्स हैं, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक्स, कैपिटलिज्म. पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये हमें बेवकूफ बनाते हैं. इन स्ट्रक्चर्स की गाइज में हम लोग एक झूठा जीवन जीते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं. तो पोस्ट मॉडर्निज्म का एक एलिमेंट, एक सिम्टम आया क्रिटिकल theory, इसको critical race CRT भी कहते हैं, critical race theory. This came about in law, and the purpose of this was to introspect and ask कि to what degree is our legal system prejudiced inherently towards certain sets of people, right? And then this CRT got borrowed into American academia, which eventually came into Indian leftist academia, and so on and so forth. And now this modern way of looking at oppression as you know the primary way of looking at relationships between sets of people is CRT. Yeah, तो इसमें मेरा issue ये था कि मतलब वही they always talk about the issues that we face, but they never seem to have any solution for it. Yeah, that is the like I think that is like on the board also many people agree कि मतलब that is one criticism to critical theory. Right. They're very much
They're pointing at the problem without providing a solution. Solution, yeah. But वही है ना कि मतलब you cannot also I think the solution to this problem, the man being more obsessed, more narcissistic, तो इसमें ये हो सकता है कि you understand your symptoms, कि मतलब you're not alone. The structures in place are also somewhat guiding you into madness. But tell me then what is your personal revolution against this? Like तू अपनी life में क्या करता है to not fall into this? What I do is कि मतलब I understand that there is a life beyond adding value to the table. Yeah, fair. And that my self-esteem, my sense of self cannot be determined by these classified labels of like इतना पैसा होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, तब जाके तुम you're this or that in society. So, फिर किससे होना चाहिए measure? नहीं होने की जरूरत है. कोई measure करने की जरूरत नहीं है. खुद को self label करने की जरूरत नहीं है. जरूरत भी नहीं है. I think you should live taking it one day at a time. So if tomorrow I'm an Arpit Bala fan, I listen to Arpit Bala, and what happens to me is I realize I make very little money. Yeah. And I'm judging myself because I go onto Instagram and all these people are, partying it out, they're living it out in whatever little small way, big or small. Yeah. And I am reminded of what Arpit said. Hey, don't measure yourself with money. Yeah. Because Arpit gave a fair argument for it. And then the question emerges, then how should I understand if I'm living my life properly? The fear of FOMO and everything. So how do I understand if I'm living my life properly? Then there are false ideals in your head. आपको लगता है कि जिंदगी में खुश होने के लिए बस यही चीजें करने की जरूरत है. But the thing is, you have to also understand that these things are marketed. These things have some sort of like recognition attached to it. The thing is कि बहुत सारे लोग बोलते हैं इतनी सैलरी, इतना पैसा, ये सब कुछ है, and there is a monetary सब self manipulation है. हाँ, monetary value attached to it, and people are like हाँ, there is value, but there is no value attached to your mother's cooking. Right. है ना? But it's still so much valuable. Right. There is no value attached to in the capitalist framework, there is no value attached to it. So there are certain aspects of life which you cannot quantify or objectify or classify. Right. And you have to understand and make your own presumptions or assumptions and live your life accordingly.